I don't want a guy to pay for shit. Like I feel like if a guy pays for you, he starts expecting things. Not just sex, but even other things. Like you listen to him, and मैं तो बाप की नहीं सुनी किसी आदमी की क्या फिर सुनूंगी. So that's why I want to buy my own thing. Thank you so much for being here. You look lovely. Thank you. As expected, we were all waiting to see what you wear, and you look amazing. So you too. You look amazing. Thank you. Welcome to Humans of Bombay. I have to admit that I'm by far the most excited for this episode. Same. I'm also very excited. Yeah. Okay. So I'm going to start with a question that's a little deep. As a teenager, when you were in Lucknow, you mentioned that you used to wear crop tops and hide these crop tops with jackets on top. To now today, where you're 100% you and you literally wear your heart on your sleeve, what has the journey of self-acceptance been like? I wasn't that conscious when I was a teenager. Actually, back then, as in with my body and with my face, I thought I'm a good-looking girl. I'm good. Self-acceptance. My parents didn't accept it, as in they were not accepting of the clothes that I was wearing. The family, they were very conservative, and I don't know what the big deal was, because I was seeing it on television कि करीना पहन रही है ना, तो मैं क्यों नहीं पहन सकती हूँ? So I was just like, they would insert religion, they would insert culture, and so I just didn't get it. Yeah. I was like, I always believed that I was born into the wrong family. I was a very bold girl, but my family was not allowing that. So when I left my house, I couldn't be more happy. I think till date, I feel that was the best decision I took when I ran away from my house. Best decision. Even if अगर मैं famous नहीं भी होती, मेरे पास पैसे नहीं भी आते, still that freedom meant a lot of things, Just being able to do whatever you want means a lot. So, yeah, I think you asked me something else, but I answered something else. No, I think it all adds up to the same thing. It works out. So we want to build a little bit of a character sketch of you. How were you in your childhood? How have those things shaped you today? So what was it like growing up in Lucknow? Did you face a lot of backlash, taunts from family, relatives? Because you said something interesting कि मुझे समझ ही नहीं आया कि why couldn't I wear it? Like, what does culture or religion have to do with it? Shaped me as a person. If you asked me this question a few years back, I wouldn't have been able to answer this in a positive way. But now I feel that whatever happened with me in the past, was required for me to happen to become this person. मतलब जो अभी मुझे online trolling जितनी होती है, I am unaffected because I've been trolled so much by my relatives, family or whatever. Though I don't care anymore. मतलब मुझे जो झेलना था मैं झेल चुकी हूँ. So faceless people on the internet can't hurt me. So I also feel that whatever happened with me in the past kind of made me stronger. That I am who I am today. And of course, हाँ बचपन में तो I'm not religious at all. I'm not even spiritual. I don't know what I am. I'm yet discovering. बचपन में भी मैं ऐसी ही थी. तो but parents or relatives don't understand this, especially conservative household. They're like, करना ही है. आपको ये सब चीजें करनी ही हैं. But I didn't really get the importance of it. I feel your relationship with God is very personal. It's not जो दूसरा बंदा फॉलो करता है, जिस तरह से दूसरा बंदा कोई भगवान या अल्लाह की इबादत करता है, वो तीसरा बंदा सेम नहीं कर सकता है. इट्स जस्ट पर्सनल. आई वाज ऑलवेज बोल्ड. मुझे अच्छा लगता था छोटे कपड़े पहनना. बचपन से ही जब लखनऊ में मिलते भी नहीं थे, मैं काट पीट के खुद कर लेती थी. मैं कोई टी शर्ट आती थी, मैं उसको काट के क्रॉप टॉप बना लेती थी या ट्यूब टॉप बना लेती थी. आई वाज ऑलवेज ऑन अ लुकआउट. मैं मॉल जाती थी, मैं दिखती थी सबसे वो स्पेगेटी टॉप्स कहाँ हैं, वो वन साइड ये सब कहाँ है. नहीं होता तो मैं खुद काट के बना लेती थी. आई वाज ऑलवेज लुक आउट फॉर दीज काइंड ऑफ क्लोथ्स दैट मेड मी फील माई सेल्फ. आई एम नॉट सेइंग कि छोटे कपड़े मेड मी फील लाइक माई सेल्फ, बट आई नेवर रियली मेजर्ड देम कि ये छोटे हैं बड़े हैं. तो मुझे बस अच्छा लगता था, मैं पहन लेती थी. बस इट वाज व्हाट आई वाज सीइंग ऑन टेलीविजन. That made you happy. हाँ, तो only clothes made me happy. Till date, only clothes made me happy. No guy has given me orgasm except clothes. I'm not even kidding.
Oh my God. आपको कब पता चला कि मुझे ग्लैमर इंडस्ट्री में जाना है, मुझे मीडिया में कुछ करना है, या पता तो मुझे अभी भी नहीं चला है कि मैं कर क्या रही हूँ। पता तो किसी को भी नहीं है कि ये भी कर क्या रही है। मुझे भी नहीं पता है। आई डिडंट इवन नो। होते-होते क्या हो गया मुझे भी नहीं समझ आया और दुनिया को भी नहीं समझ आया। आई स्टिल डोंट नो व्हाट आई एम डूइंग। बट आई वाज़ ऑलवेज़ आई न्यू वन थिंग बचपन से। आई वांटेड टू बी एन एक्टर बट अ फैशनेबल एक्टर। Like always used to see people on screen, you know, ऐसे टीवी में मैं देख रही हूँ इंटरव्यू है ऐसे दिख रहे हैं कुछ भी पहने तो मैं बोलती भी थी यार इतने पैसे अच्छे कपड़े क्यों नहीं पहन रहे हैं ये आई वाज ऑलवेज लाइक दैट बट बचपन में ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे एक्टर बनना है मुझे पता था मेरी फैमिली कभी अलाउ नहीं करेगी तो मुझे था कि ये सपना है इट इज जस्ट अ ड्रीम दैट्स गोना यू नो पास अवे एज अ ड्रीम Right. But you mentioned in one of your interviews that you spoke to your father and said that I want to do fashion designing, and Yeah. he said that दर्जी बनना है. ये स्मॉल टाउन में हर जगह है इट्स नॉट जस्ट माय फादर आई फील आप ऐसे कुछ अनकन्वेंशनल चीजें बोलोगे और 10 साल पहले तक 10 साल पहले यू नो स्मॉल टाउन में कोई अपने मम्मी पापा को बोलता कि मुझे फुटबॉलर बनना है तो अरे पागल है क्या मतलब middle class people small town people they don't understand their dreams because financial मतलब वो इतना होता है कि financial security ज़्यादा ज़रूरी है so they want you to have a financial security even if it's costing you your mental peace or whatever So how did you decide कि this is what I want to do और ये तो मैं करूँगी? मजबूरी मैंने तो डिसाइड किया ही नहीं था मैं तो भाग गई घर से और मैं इसलिए नहीं भागी थी कि मुझे कोई मतलब फ्रीडम चाहिए थी इट वाज जस्ट माय हाउस हैड बिकम वेरी अनबेरेबल इट वाज टू मेंटली इट वाज एग्जॉस्टिंग आई वाज मतलब मेंटली हो नहीं पा रहा था मतलब टू मच टॉर्चर लाइक मतलब फ्रॉम रिलेटिव्स फैमिली एवरीथिंग इट बिकेम too much to take in that I tried suicide also few times then I thought to myself कि कभी भी कर सकते हैं suicide एक बार लाइफ को चांस दे के देखते हैं so I just ran and I was doing everything that was possible to earn money ट्यूशन भी पढ़ा रही थी कॉल सेंटर में भी काम कर रही थी करते करते मुंबई आ गई जॉब अपॉर्चुनिटी के चक्कर में पर अब मैं यहाँ पे आई मैंने देखा यहाँ तो ऑडिशन भी होते हैं बचपन से सपना था तो मैंने कहा ठीक है जॉब भी ढूंढते रहेंगे ऑडिशन देते रहेंगे कुछ लग गया होते 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 पता नहीं कैसे कहाँ पे क्या पहुँच गए Destiny, I think, had a part to play with it. डेस्टिनी एंड आई वुड से perseverance Perseverance. कि I'm not कि going to मैं give up. yeah I didn't stop once I started I never stopped and I was always very ambitious Yeah. I didn't know how I didn't have a game plan nothing but in my mind I always had this thing कि मुझे कुछ बड़ा करना है मुझे पैसा चाहिए because of course as a child I was being told by everyone that I'm not good enough and मैं ये हूँ मैं वो हूँ as a girl I should stay in my limits all that so I had this thing बचपन से कि एक दिन तुम सब मैं तुम लोग को बताऊंगी you know you guys are gonna come to me कि ये कर गई तो I always had it I don't know how Yeah. We have to talk about this part of your life, you know. आपने इंटरव्यू में कहा था कि there was a time where your childhood had abuse, a lot of verbal and physical abuse, Yeah. but there was one time when you almost fainted, or you did faint when you were being physically abused. So, can you walk us through? I would also like to correct there are a lot of media reports that say I was sexually assaulted by my father that never happened Yeah. but a lot of people say that really? yeah Okay. I've read it a lot just correcting here it was just physical and verbal physical as in marpeet which I have also seen people say कि एक हाथ थप्पड़ में क्या इतना यू नो बोलती है कि अरे सबके घर में मार पड़ती है बच्चों को सबके घर में मार पड़ती है बच्चों को ये क्या लॉजिक हुआ मतलब एवरीवन डील्स विद ट्रॉमा डिफरेंटली कोई आदमी जो 7 फीट के पानी में डूब के मर रहा है तुम ये नहीं बोलोगे कि अरे ये तो 30 फीट के पानी में डूब के मरा तो ये ज्यादा इम्पोर्टेंट या ग्रेव है ज्यादा इसका यू नो वो ज्यादा उससे मरा है तड़प के करेक्ट जो 7 फीट के पानी में डूब के मर रहा है जो 30 फीट के पानी में डूब के मर रहा है मर तो दोनों रहे ना so you can't measure trauma yes so it was just more than physical it was mental also like mentally it was just very frustrating and I forgot the question so the question is that how did you put up with it because it's such a childhood is supposed to be carefree childhood is supposed to be when you're growing up is supposed to be protected this is a very reverse situation so how were you dealing with that I didn't know how I was dealing वो अब बड़े होके निकलता है you know now I understand there are some personality traits कि maybe these are because of my childhood trauma as in I get angry sometimes छोटी छोटी बातों पे मैं पागल हो जाती हूँ
and I just go crazy. Like अभी तो I'm still in good control. बीच में तो I would go angry. I could have even killed someone. So I feel like now I get to know. उस time deal कर ही नहीं सकते थे. आपको बस सहते जाना है. So I was just यही सोचती थी कि बड़े होके मैं अपना जब होगा तब देख लूँगी. अपना जब होगा कोई नहीं, अभी तो शायद सहना ही पड़ता है सबको. So as a child in these kind of households, you can't deal with these things. You just have to, and there's no one to talk to. You can't even tell anyone, क्योंकि किसको बताओगे, क्या बताओगे? Were you close to your siblings? You have. Yeah, we were close, but we were never taught to be loving. Okay. So we were not like we would sit together and talk, क्या अच्छी हुआ, I love you. We were never taught like that. We were close in ways that hardships got us closer, but we never spoke to each other heart to heart. We still don't, but we are friends now. But we were not close as siblings. And what was the final straw? Was there एक particular incident कि अभी मुझे भाग के जाना है? एक नहीं था. होते बचपन से होते then later when I was 15 someone uploaded my picture on a porn site. I've mentioned this. Yeah, it was a normal picture, as in I uploaded a picture wearing a crop top, tube top, so or as my Facebook profile photo. Yeah, someone downloaded those pictures and uploaded it on a porn site without morphing, without anything. Just the same photo. Just the same photo. Just that it was on a porn site. Correct. धीरे धीरे सबको पता चल गया कि अरे porn site पे इनकी पिक्चर है, तो everyone started like blaming me a lot. I was told that I'm a porn star. I was like, where's the video? तो they're like, नहीं ये porn star है. Even my own father, he was like, she's a porn star. I think my father was trying to gain sympathy from all this. He was telling everyone that the porn site website people have asked me for 50 lakhs. Like he's told the relatives that if you want to remove your pictures, and I was like, that's not possible, but I couldn't say anything because मुझे मार इतनी पड़ रही थी, मुझे मारा जा रहा था, मुझे पीटा जा रहा था, and I was just so confused that I'm the victim here. Why are you hitting me? Like I have not done anything. But they were not ready to believe it. They were like कि ये तो porn star है, ये तो porn star है. So I endured that for 2 years, and it was just too much to take in from the relatives, from my own father. So it just one fine day. How old were you? 17 when I ran away. Yeah, I just turned 17. So what did you decide, and what did you have with you when you decided, okay, I'm going to Nothing. I didn't have anything. Me and my sisters just left, and then we went to some पुलिस स्टेशन और समथिंग 109 पता नहीं क्या है कि भाई हमें नहीं रहना है फादर के साथ ये वो. तो वहाँ पे जाके भी आई डिडंट रिसीव अ गुड रिस्पॉन्स, बट ये था कि माई फादर देन जस्ट ही वाज लाइक कि नहीं ऐसे कैसे अलग हो सकती है. बट माई एल्डर वन वाज 18 एंड आई वाज ऑलरेडी 17. तो दे वर लाइक छोड़ दो. दे वर लाइक हम वापस तो नहीं जाएंगे. देन वी रन अवे. And then what? How did the next few months? How did the next? It was so very difficult यार. सुबह हम ऐसे रात में पार्क में सो जाते हैं या किसी फ्रेंड की कार में सो जाते हैं. सुबह जब उनके मम्मी पापा ऑफिस जाते तो हम खाना पीना खा लेते. फिर हम कहीं ना कहीं इट वाज वी वर लिविंग लाइक वैगाबॉन्ड्स कि अच्छा अभी तुम्हारे मम्मी पापा घर पे नहीं है 10 दिन के लिए, तो हम उनके घर पे चले गए रहने के लिए. तो उसके यहाँ वी वर, बट हम किराए पे घर देख रहे थे, मी एंड माई सिस्टर्स. तो मिल नहीं रहा था. देन आउटस्कर्ट्स पे नई बिल्डिंग्स बन रही थी, तो वहाँ पे किसी ने हमें ऐसी 2 BHK दे दिया 6,000 रुपये में. ओनर ने इतना ध्यान नहीं दिया और हमने बोल दिया कि हम यहाँ पे, आई वॉज इन कॉलेज, कि हम कॉलेज कर रहे हैं, हम कहीं रायबरेली से आए हैं. तो दे जस्ट गिव इट टू अस. और पैसे कहाँ से आते थे? मैं ट्यूशन पढ़ाने लग गई थी बच्चों को. अच्छा. जितने भी जानने वाले लोग थे तो मैं पैदल जाती थी ट्यूशन. मतलब जैसे ही मैंने घर लिया मैंने उसी दिन से ट्यूशन शुरू कर दिया था. तो मैं मतलब पैदल जाके बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही थी. किस सब्जेक्ट में? मुझे तो खुद भी कुछ नहीं आता था, बट 8th तक मैं मैथ्स जो भी था, जितने भी सब्जेक्ट से 8 तक, किंडरगार्टन से लेकर 8 तक मैंने कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया था. बट वो भी मैंने 2-3 महीना ही किया. देन मैं दिल्ली चली गई थी. बिकॉज माई फ्रेंड्स वर डूइंग कॉलेज देयर. तो वो सब फ्लैट्स लेके रहते थे. तो वजह कि यार मुझे यहाँ तो लखनऊ में कुछ हो नहीं पाएगा, कोई ग्रोथ नहीं है, मैं यहाँ कॉल सेंटर में काम कर लूँगी. तो मैं वहाँ गई. वहाँ पे मैं कॉल सेंटर में तो मेरा मन ही नहीं लगता था. मैंने ज्वाइन किया, मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता था. मैं 4-5 लड़कों को बोल देती थी प्लीज़ वो जो भी बोलते हैं ना, जो बोल रहे हैं, जो भी सर जो बोल रहे हैं प्लीज़ कर दो. मुझे ये भी नहीं पता है मैंने किस बात की सैलरी ली, मैंने तो कुछ काम ही नहीं किया है. वही लड़के बेचारे कर देते थे मेरा काम.
and I was not satisfied. I was still not satisfied. I was like क्या करूँ. तो मैं किसी को असिस्ट करने लगी वहाँ पे. फैशन डिज़ाइनर टाइप था. मैं असिस्टेंट बन गई, कपड़े लेके इधर उधर जाती थी. एंड मतलब अकेले थे दिल्ली? Your sisters were still yeah, in they were Lucknow? in Lucknow. Okay. मैं अकेले. My younger one was in school. बड़ी बहन थोड़ा सा she was very she I don't think so she had the same mindset as me that she wants to do something. I don't think so they were confident enough. For some reason I wanted to enjoy the freedom because I saw that half of my batchmates from school were in Delhi enjoying going out. लखनऊ में तो इतना था नहीं. मैं देखती थी इनकी फोटोज इंस्टाग्राम पे, ये सब दिल्ली विल्ली घूम रहे हैं मजे से, मतलब कॉलेज के नाम पे. तो मैं भी उसी चक्कर में ज़्यादा निकल गई. एंड सडनली फ्रीडम एंड एवरीथिंग. या So you were alone in Delhi, and now you're with your friends. अलोन एज इन फ्रेंड्स, कभी किसी फ्रेंड के यहाँ, कभी किसी फ्रेंड के यहाँ. पर ऐसे कोई मतलब अकेले नहीं रह रही थी मैं. कभी किसी, जैसे एक महीना इस फ्रेंड ने बोला मेरे यहाँ आके रह लो, पैसे थे नहीं रेंट देने के, तो जिसने बोला मेरे यहाँ पे आके रह लो, मैं उसके यहाँ अपना बोरिया बिस्तर बांध के चली जाती थी. तो अलोन तो नहीं बोलूँगी मैं. Okay. लेकिन did you finally feel safe? यार मैं थी मुझे लगता है उस टाइम पे. आई डेंट केयर. मैं छतरपुर में रात के 3 बजे पार्टी करने के लिए छोटे छोटे कपड़े पहन के सड़क पे ऐसे, क्योंकि मैं किसी गली में रहती थी, बाहर से निकल के मुझे जाना पड़ता था उबर के लिए. सोचो मैं रात के, अब मुझे रियलाइज होता है कि मेरा तो रेप हो सकता था या कुछ भी हो सकता था. बट आई वॉज सच अ फूल. एंड बट आज तक लकीली दिल्ली में मेरे साथ कोई ऐसी हरकत नहीं हुई. एंड यू नो आई फील दीज ट्रेटर्स जो ये करते हैं ना, they're not the ones, they're not strangers, the people you know. Sometimes people I've also seen this in a lot of cases, like molesters are not some strangers, they're usually आसपास के ही लोग होते हैं. पर टचवुड मेरे आसपास के लोग उस टाइम अच्छे थे, तो ऐसा कुछ मुझे फेस नहीं करना पड़ा. मुंबई आके एक्चुअली मैंने 2-3 बार वो चीज़ें फेस करी हैं. Oh really? Yeah, but I've never faced this in Delhi. I think I was just a lucky girl. Yeah. Yeah, very few lucky girl. And how did the move to Bombay happen? मुझे बॉम्बे ही आना था. पहले से ही कि नहीं, दिमाग में था, कॉन्फिडेंट नहीं थी. अब जब मुझे फ्रीडम मिली गई थी, मैंने कहा जब दिल्ली जा सकती हूँ तो क्या ही है, बॉम्बे चली जाऊंगी. दोस्तों के यहाँ रहने लग जाऊंगी, इसमें क्या है. मतलब बट था दिमाग में कि यार बॉम्बे में कुछ शायद बन जाएगी बात, कुछ हो सकता है मेरा. तो एक फ्रेंड ने बोला यहाँ पे यार जॉब इंटरव्यू है. ही वॉज माई सीनियर. जॉब इंटरव्यू के लिए बुलाया मुझे, नहीं मिली जॉब. एक फ्रेंड के यहाँ फ्री में ही रह रही थी, ऑडिशन देने लग गई. पर ऑडिशन देते देते फिर 1 महीना हो गया, तो उसने कहा अब तो मेरा लैंडलॉर्ड बोल रहा है तुझे निकलना पड़ेगा. बड़ी मुश्किल से मैंने फिर उधार मांगा एक फ्रेंड से, दूसरे फ्रेंड से उधार मांगा, कहीं जाके पीजी में रहने लगी और ऑडिशन देती रही. फिर छोटा मोटा मुझे सीरियल्स मिलने लगा, डेली सोप. हाँ, मतलब ईजी नहीं था बट आई वॉज एंजॉइंग इट. मज़ा आ रही थी. Bombay has a different vibe. Like no one was judging me, and I was seeing people on road 3 बजे भी, you know, girls can go out, and everyone is just in their own. No one gives a fuck here. Yeah. So I was enjoying that, and I had big dreams. मुझे लगा था कि अब तो मैं एक टीवी सीरियल में लीड कर लूँगी, मुझे बहुत जल्दी लीड मिल जाएगा, and I'll be a big television star. I never dreamt of becoming a Bollywood star. मुझे पता था मेरी औकात है ही नहीं उतनी. I knew it from the start, but I was like टेलीविजन में हो सकता है, मैं प्रेरणा या तुलसी जैसे कुछ एक हाउस होल्ड नेम बन जाऊंगी, घर ले लूँगी 2 साल में, कार तो हो ही जाएगी अभी इस साल. बट नथिंग दैट सॉर्ट हैपेंड. कुछ नहीं हुआ. एंड आई वाज जस्ट सो हार्ट ब्रोकन. आई थॉट आई एम वेरी गुड लुकिंग, बट यहाँ पे आके रियलाइज आई एम नॉट. मेरे दांत बाहर थे, मैं थोड़ी चबी सी थी, मेरे लिप्स अपेरेंटली बहुत पतले थे. सो देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई सेल्फ. You remember your first audition? It is on YouTube. Oh really? The audition is on YouTube. अभी किसी ने अपलोड कर दिया, कुत्ते कहीं के. Don't. मैंने बोल भी क्यों दिया? I am acting like, अच्छा तो ये क्या होता है, मुझे पता ही नहीं. जब डायलॉग बोलते तो हाथ क्या करते, तो मैं हैंड्स आर लाइक अच्छा तो तुम ऐसे जा रहे थे, फिर बाद में मैं हाथ हिला रही हूँ. अच्छा तो तुमने ये किया. I had no idea कि हाथ हिलाना होता है ऑडिशन में, क्या करना होता है, हाथ बाद में हिलता है, क्या हिलता है नहीं हिलता है. I was just so confused. But धीरे धीरे करते करते I got the hold of it. I got the hold of the commercial acting they require in TV. Correct. Like the Kamalika thing for the negative. आंखें ऐसे करके
तो तुम्हें लगता है तुम मुझसे भी तेज हो? I got the hold of it. So then I started getting a lot of negative roles. Roles, Yeah. yeah. Do you remember कि आपको when did you start feeling financially secure in Bombay? Right now. Right now. मेरे पास पैसे थे ही नहीं लास्ट ईयर तक. मैं जो ये तुम पीपल यूज टू सी मी इन फ्रंट ऑफ द मीडिया ड्रेस्ड अप लाइक दैट, वो सब उधार के पैसों का था. मैंने बिग बॉस जाने के लिए भी उधार लिया था कि मुझे प्लीज कपड़े खरीदने हैं, कपड़े सिलवाने हैं, मुझे पैसे दे दो, मुझे पैसे दे दो. कितने लोगों से उधार लिया था मैंने, अब जाके सबका उधार चुकाया है. अब अभी मेरे पास मतलब बिल 1 साल तक मेरे को फाइनेंशियल, मेरे 1 साल पहले तक मेरे पास रेंट के लिए भी पैसे नहीं थे. मैं बिल्कुल, मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि मैं रेंट भी कहाँ से, किसी तरह मेरा रेंट निकल जाता था. फिर उसके बाद खाना भी कुछ पता नहीं है. बट ये अच्छी बात है कि 4 दोस्त बना लो, एक दिन इसके यहाँ खा लो. तो मेरा ये फंडा क्लियर था बचपन से कि खाने की दिक्कत नहीं होगी, दोस्त बना लेंगे, 2 वक्त का खाना तो कोई भी दे देता है. हाँ. तो ये मेरा फंडा क्लियर था, तो मुझे उस बात की टेंशन नहीं होती है. टेंशन इंसान को होती है जो ऊपर की चीज़ हमने बैठा रखी है ना, कपड़े कहाँ से आएंगे, मेकअप कहाँ से आएगा, हील्स कहाँ से आएंगी, वो टेंशन ही ज़्यादा थी. सो बट या फाइनेंशियल सिक्योरिटी इट्स अभी भी आई एम वेरी, मतलब पैसे सेव नहीं हो पा रहे हैं यार मेरे पास. एंड नॉट लाइक आई एम अ स्पेंडथ्रिफ्ट. आई डू नॉट स्पेंड ऑन माई सेल्फ, एज इन I don't even go to a parlor. I don't have luxurious items, but it's just responsibilities itni hai na. And then I've hired so many people to work for me. So my money keeps going into those things, and then my family and idhar udhar. Yeah. So abhi bhi I don't feel very financially secure. Let's talk about Big Boss. वो आपका big break था. I think that the garbage bag look was iconic. I think it got a lot of traction. How was the experience? और आपने क्या सोचा जाने से पहले बिग बॉस के घर में? कुछ ही नहीं सोचा था, काम नहीं था बहन, नहीं जाती तो क्या करती मैं. क्या ही सोचा मैंने कहा, पर मैंने ये सोचा था अब तो मैं स्टार बन जाऊंगी बिग बॉस के बाद. लाइक आफ्टर बिग आई थॉट आई विल विन द शो. आई एम सो अमेजिंग, मेरी जैसी पर्सनालिटी किसी की है ही नहीं. मैं तो शो जीत के आऊंगी, मतलब मैं इसके बाद इंडिया की नंबर 1 स्टार बनने वाली हूँ. एंड आई वाज आउट एक हफ्ते में. आई कुडंट बिलीव इट. आई वाज लाइक क्या कर रहे हैं लोग, मतलब क्या है ये, मैं कैसे आउट हो गई. आई वाज सो डिसअपॉइंटेड. मुझे बिग बॉस से निकलते ही अगले दिन ना 50 इंटरव्यू लाइन कर दिए थे उन लोगों ने, वाईकॉम ने. एंड देन मैंने रोते रोते इंटरव्यूज दिए, मैंने गालियां दी हैं लोगों को कि वो कुत्ती ऐसी है, वो तो सांप है, वो तो कमीना है, वो तो, ये तो बहुत अच्छी गालियां हैं. If you hear my interviews, they just beep, 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 beep. It was bad. But it worked out. It worked out because maybe God's plan or something, or I don't know. I made it work out. मतलब I saw people giving attention to my outfits. Then I started concentrating on that. It worked out in a very weirdly different way that no one would have ever thought. You couldn't think कि बिग बॉस में कोई गई, वो भी OTT में एक हफ्ते में निकल के, now she is getting all the attention. It's kind of weird if you think like that. Yeah. When did it start changing after Big Boss? You've come out, interviews हो रहे हैं, सब हो रहा है. At what point did that momentum start building? कि okay, now ये मैं करूँगी, और this is where the traction is, or this is where the money is, because money is a factor. No, money was not a factor. Then money नहीं आ रहा था. In fact, जो थोड़ी बहुत ब्रांड डील्स आ रही थी वो भी चली गई थी. क्यों? Because I was being trolled so much, and I was literally a joke on the internet. So no one wanted to collaborate with me, or no one. TV serials का भी सब बंद. They told me कि नहीं, you're too, your image is too bad for TV. मूवी तो मुझे पता ही था कि औकात नहीं है. तो मेरा तो काम का जरिया पूरा बंद हो गया था. तो वही है, उधार ले लेके इधर. पर I was still like कि नहीं, अभी फेमस, अभी कुछ पैसा नहीं मिल रहा है तो फेम तो मिल रहा है, तो यही करते हैं. तो मेरा था कि चलो कुछ तो मिल रहा है. तो मैं इसीलिए उसी में फिर लग गई. Just for the sake of fame. It was, money was a different thing. Yeah, this was that route कि people are noticing me at this point. हाँ, सिर्फ नोटिस का था. फिर मैंने कहा मनी तो शायद कुछ ना कुछ इससे करके मिल ही जाएगा, बना ही लेंगे, देख लेंगे. So when did you start making your own outfits? I mean, like अभी मुझे ये करना है, I want to focus on this, because they're all so different. I was always into DIY. Yeah. As in, even before going to Big Boss, I was making my own outfits, but तब मैं अकेले काम करती थी. I was famous on Instagram as this DIY girl. I had some million followers because I was T-shirt लेके मैं उसको convert कर देती थी dresses में या कुछ.
But then I don't know. I started after Big Boss. I started getting recognition for my outfits. So I just went crazier because I was like, I know मेरी trolling होती है, मुझे पता है. But I was like, this is what's getting me attention. Yeah. You know, some things I do for fashion, some things I do for attention, and I've mixed both the things because I love both. Yeah. I love fashion, I love attention, so I just mix the two of them. It's so refreshing that you said that, because I feel like that's what makes you you. Just say things. Yeah, my parents never gave me attention as a child, yeah. So now I want it from the entire world. Yeah. I want the entire world to know, and if I walk into a room, it should be just Urfi Javed, Urfi Javed. Shah Rukh Khan bhi ho to pehle Urfi and then Shah Rukh Khan. I mean, no offense to Shah Rukh Khan, but I crave that level of fame. Like, yeah. Wow. There was this thing where Diet Sabya would call out your outfits, and you actually message them saying that, but I they're copies because I can't afford the real thing, which is so just brutally honest. Yeah, I think they called me out 1 or 2 times. So I was just like, you know what, call me out. You're making me famous, and just want to tell you that I'm so glad I'm on Diet Sabya. I mean, it's been a dream of mine. Yeah. And I had no idea यार कि outfits copy करना ऐसे गलत भी है. Small town में if you see तो it was normal कि करीना वाला लहंगा सिलवा रहे हैं, करीना वाला ये करवा रहे हैं. मुझे आइडिया इतना था नहीं कि also I feel like I am not really copying them unless you sell it, then it's bad. अगर मैं किसी डिजाइनर का आउटफिट कॉपी करके उसको बेच रही हूँ तब शायद वो गलत है. I'm just recreating these outfits because I like them and they're not accessible to me. Like I just they're so expensive. ऊपर से आधी ज़्यादा ब्रांड्स यहाँ है नहीं and I can't go to Paris, इतना पैसा है नहीं. बट अब जब थोड़ा बहुत पैसा है तो I make sure मैं 1 महीने में पैसे इकट्ठा करके म्यूग्लेयर ले लेती हूँ. मैंने म्यूग्लेयर मंगाया, मैंने और भी ब्रांड्स में इन्वेस्ट किया है जितना मतलब मैं कर पाती हूँ. बट आई हैड नो आइडिया कि ऐसे कॉपी नहीं कर सकते बिकॉज आई हैव सीन Zara is bluntly copies all those famous designs, and वो तो बेच रहे हैं. Zara हो गया या कोई भी अच्छी ब्रांड हो गई. And in fact I've seen big brands also copying from each other. Like if you see that Versace and Louis Vuitton ka print, their famous print, it's not actually theirs. They've copied it from African tribes. Fendi, Louis Vuitton, Gucci, all of these copy their prints they have in the past and they still continue doing it from African tribes. And there is no mention of the African tribes that they've copied it from them. So I never knew that it's a wrong thing or, Also, I told him that, you call out Gandhi copy, but mine is not Gandhi copy. But I feel like whatever I get, when I copy the outfit, I make sure it's like perfect, it's better than the original. Yeah, so I'm making it better. Yeah. That's amazing. So at what point after, when you started doing this, obviously your Instagram following was growing, you were getting papped, all these things were happening. At what point then were you like, okay, theek hai, now I'm comfortable? You said that, up till a year ago, financial security was not there. I'm still not comfortable. Until I buy myself a Rolls Royce, I'm not comfortable. Okay, better than what it was, right? Like scrambling for rent. I think about 6 months back, I felt that now I can take care of my family nicely. मतलब ठीक है. बहुत अच्छा. I'm not a materialistic girl, but I want money. Yeah. I like money. Yeah. The more I started getting it, the more I want it. But yeah, 6 months, 1 year. 1 year से थोड़ा पहले 6 months, yeah. And you said that I can take care of my family. So parallelly, how's that been? How's it been? Money is not everything, but it does give you freedom, ना. Yeah. मतलब ऐसे मैं कोई मटीरियलिस्टिक नहीं हूँ, पर जब होता है पैसा तो अच्छा लगता है कि कभी कोई ज़रूरत पड़ी तो मुझे पता है मेरे पास है. अब कल को मैं बैठी हूँ 10 and I'm like चलो दुबई चलते हैं. At least I can afford it. अभी मैं दुबई बोल रही हूँ क्योंकि that's what I can afford. But it just feels good. Like maybe घर में कोई health crisis भी है, कुछ crisis भी आया. So it feels good to have that kind of money. But how's the relationship with your family now? बहनों भाइयों का तो चलता ही रहता है लड़ाई झगड़ा. तो समटाइम्स इतने लोग हैं, 5 भाई बहन हैं, तो कभी कोई किसी से लड़ रहा है, कभी कोई किसी से लड़ रहा है, कभी इसकी उधर, वो सब चूहा बिल्ली का खेल चलता ही रहता है. And मम्मी पापा?
So father, though I've not spoken in 10 years. Has he ever tried reaching out? Yes, 4, 5 other wives now. Oh my God. Yeah, he remarried. He has multiple kids, multiple wives. I think he's happy with his family, and I'm very content with where I am today. I was never attached to my father. Never. I always wanted to get away from him. Always. So I have no regret. I think you should cut toxic people out. Even if it's your blood relationship, it's not good for you. It's not good for you. That's what I feel. So I don't want to be in touch. I don't want to do anything with him. अच्छा है, बहुत अच्छा है. मुझे नंगे घूमना है भाई. And what about your mother? It came up in an interview कि after you left, उसके एक साल बाद, Yeah. she called you and Yeah. said that he's remarried Yeah. and kind of came to you at that point in Yeah. time. So what is your relationship like with your mother? माँ तो माँ होती है यार. मतलब थोड़ा बहुत तो इनिशियली एंगर था, बट देन जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो सब चला जाता है. एंड आई फील लाइक माई फादर all of us mentally a lot. Even my mother had to go through it mentally. Now that I look at it, it's not even her fault. She was also a kid when she got married. She had 5 kids when she was 25. Yeah, so it was not easy for her also, I feel. And being in an abusive relationship, 25, 5 kids, you don't know anything about the world. So I think she's also like mentally not okay because of what was done to her in the past. So it's not a fault. And वैसे भी मिडिल क्लास औरतों की थोड़ी होता है ना कि पति चाहे जो करे, बट उनको सिखाया जाता है कि पति को नहीं छोड़ सकते हो क्योंकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती नहीं है. तो लाइक मैं 5 बच्चों का ख्याल कैसे रखूंगी. So, होता है वो मिडिल क्लास औरतों में. So are you taking care of her now? Where is she? Yeah, I've been financially taking care of my family from a very long time. Yeah. I mean, अभी तो it's just better. Like I can take care of them in a better way. Like I can give them a better lifestyle now. Is she proud of you? मुझे पता नहीं. I think so. I mean, she keeps saying that wherever I go, people are like, उर्फी की मम्मी जा रही हैं. But no one has ever told me they're proud of me. But it's like an unsaid thing in family. Maybe, I don't know. I can't say. What is something nice that you bought for your family? Anything for your siblings or your mother? I give them cash. जो खरीदना है खरीदो. That's the best gift I feel. It's the best gift. Yeah. Please, when people give gifts, it's like, why? Just give me the money. I'll buy myself. Yeah, I don't like gifts at all. So, but even if someone buys something for me, I'm like, अरे यार, because I know I won't like it. So that's why I just give them cash. कि जो चाहिए पैसे ले लो. I will not buy you anything. It's that only. I give her cash. जो खरीदना है खरीदो. No, I bought her an iPhone. Wow. Yeah, when it released last year, iPhone 14, and she was like, wow, is that for me? Like, she went crazy. She was not talking to me. We had a fight. So I just got her an iPhone, and she लड़ाई वड़ाई भूल के, she's like, iPhone. मतलब, are you sure? Because she wanted to become a vlogger. Vlogger. उनको खाने का अपना करना था और reels बनानी थी. So I got her an iPhone, and she couldn't believe it. Like, that is the most expensive thing she's ever gotten as a gift. Yeah, because my father also never used to give her money. उनको महीने में 500 रुपए ही मिलते थे. Yeah, she was like that. So now she felt, I feel, that was the most. So sweet. Yeah. And where is she now? She's in Lucknow, but she keeps coming back and forth. Yeah. And now, when we look at you here today, the fame has obviously also become deeper. It's become more relevant, right? Whether it's the Dirty Magazine interview that you did, or the recent photo shoot with a very iconic fashion designer, obviously Abu Sandeep. Oh yeah. How does that make you feel now, at the other end of the spectrum? Honestly, very neutral. Yeah. I don't feel anything. मतलब अच्छा लगता है. But if you actually ask my team also or anything, I'm not like, ठीक है, मतलब good. So what will make you that? I don't know यार, वो अभी तक आया नहीं है. I feel like I've not achieved anything in my life. I've not, I don't know. I feel like अभी बाकी है, अभी कुछ करना है, कुछ बड़ा बाकी है यार. I feel like I'm still waiting for that one phone call or one opportunity, which I'm yet to prove my worth. I feel I'm way more than this, and I can be way more than this in terms of fame, in terms of
I don't know yet, but I feel like अभी बाकी है, अभी कुछ बड़ा होना बाकी है. It will happen. I'm तो sure. Yeah, it will Yeah, I happen. didn't come this far to come this far. मतलब एक तरह से देखा जाए तो my life is, now that I look back at it, it's nearly impossible. Yeah. मतलब ऐसे कैसे सुना है तुमने ऐसे किसी को बिना कुछ करे फेमस हो गई लड़की कपड़े पहन के? It was near to impossible 5 years back. Yeah. So it's not by accident, I feel. Maybe the universe was conspiring it so that maybe I could achieve something bigger, or so I feel कुछ तो होगा, कुछ तो होगा. I don't know what, I don't know when, but कुछ तो होगा. It will. The universe loves a stubborn heart. It will happen. It will happen for you. If I'm to even ready to, like pay the universe, रिश्वत लेनी है ले लो भाई, कुछ कर दो, कितना पैसा चाहिए अभी है, अभी दे सकते हैं. Yeah. Anything to make it happen. Anything to make it happen. I'm like totally a career oriented girl. Like I'm not, I don't know what a relationship is. Like as in, because I'm too much into my career that I know I cannot have a relationship also. Really. Yeah. I'm And not that's interested now also. or even in the future. For 5 years तो I know. You There's no chance. I'm not even interested in any guy यार. कोई अच्छा ही नहीं लग रहा है. मतलब पता नहीं क्या हो गया है मुझे. Nothing excites me except money. The only sound that gets me excited is when I hear वो message phone में ting कि पैसे आ गए account में. Yay! That gives me orgasm. Or my clothes, This outfit is mine. Yay! Otherwise, nothing else. Wow. You said something very interesting. Speaking of all these things that you just spoke about, you said something very interesting in the Dirty Magazine interview. You said as a 25-year-old single Muslim woman, you find it difficult to rent. तो अब तो मैं खरीदूंगी. अभी भी मेरे को नहीं मिल रहा है घर यार. मतलब I'm still trying to find. So what is the reason that you would say? Because we know this, that I recently moved out. So I've been told by 2-3 people that if you're single, you can't stay here. And I was shocked. I was like, wait, what? Why? Because I'm going to pay rent. That's the issue. एक तो सोसाइटी वालों को और ओनर को बनना है आपका माँ बाप. तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, तुम लड़के नहीं ला सकते, तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम मेरे घर पे नॉनवेज नहीं बना सकते हो. अरे क्या है, माँ बाप बन रहे हो क्या? अपने बच्चों पे ध्यान दो ना. एक तो पूरी सोसाइटी को दूसरों के बच्चों पे ध्यान देना है. तुम अपना घर दे रहे हो कि रिश्तेदारी कर रहे हो मेरे साथ? पैसा लो और अपना काम करो. बट फर्स्ट, एज यू सेड, सिंगल, तो आई एम सिंगल. सेकेंड, मुस्लिम. एक तो हिंदू ओनर्स को प्रॉब्लम है कि मैं मुस्लिम हूँ. मुस्लिम ओनर्स को भी प्रॉब्लम है कि ये ऐसे कपड़े पहन के जाएगी, हमारे मुसलमानों में नहीं चलेगा. सो दैट्स द प्रॉब्लम. देन थर्ड, एक्टर्स का थोड़ा सा है, बिकॉज they've seen a few suicides in the acting field or whatever. So in the industry in the past few years, so they're scared that something might actors कहीं ये ना कर ले, suicide ना कर ले हमारे घर में. So that but I feel like mental health is a general issue. It's just that when an actor does it, it gets highlighted. Otherwise mental health की problem सबको ही है, सिर्फ actors का नहीं है. So वो भी एक issue हो गया. फिर then Urfi Javed comes with a lot of controversies. Paparazzi also. तो वो तो मतलब वो अब तो घर में तो घोड़ी घुस रहे हैं अंदर. नीचे पिक्चर खींचे, जो करना है करो, तुम्हारे बाप का क्या जा रहा है? I don't understand this thirst for people to control others' life. मतलब मैं शादी तो नहीं कर रही हूँ घर के लिए. I'm not getting married just to get a house on rent. So that's why I was so fed up. I was like, you know what? अभी मैं एक छोटे से 1 BHK में रह रही हूँ and my work studio is also there. So it's very cramped up because my things are getting big, like more and more, and the apartment is getting smaller. So I am desperately trying to find a house, but it's not happening. So I was thinking ki, let me adjust for a few months and save up and let's just buy a house. But फिर I don't want to buy a 3 BHK. I want to directly buy a duplex. मुझे चाहिए मेरा 8 BHK जिसमें से 2 रूम होंगे मेरे वार्डरोब, बाकी रूम का हम देख लेंगे क्या करना. आई वॉन्ट 2 रूम्स जस्ट फॉर माई वार्डरोब. एक में जूतों का वार्डरोब होगा, एक में कपड़ों का होगा. बिकॉज आई लव माई हील्स. माई हील्स नीड टू हैव अ सेपरेट रूम फॉर देमसेल्व्स. तो अभी उसकी भी मैं फिर सोचती हूँ कि अरे यार, फिर वो दैट like I just bought a car and I'm not happy. I wanted to buy a Range Rover. Which car did you buy? I buy a Jeep Meridian. but मेरा ना बचपन से सपना है, मुझे रेंज रोवर खरीदनी है. मेरा सपना है, मतलब बचपन से.
मुझे एक ऐसी बीस्ट जैसी एसयूवी चाहिए जिसमें मतलब कोई देख रहा है 5 फीट की लड़की वो रेंज रोवर चला रही है और मैं फिर ऐसे गाना बजा के, वो है नहीं इंस्टाग्राम पे कि नाच करवा के मारेगी क्या, जो भी वो इंस्टाग्राम वाला, मुझे उस पर रील बनानी है मेरी रेंज रोवर पे. दैट्स माय ड्रीम. It'll happen. There's a long way to go. Time yeah, is relative, right? होगा. अरे नहीं यार, कल किसने देखा, कल मर गई मैं तो मुझे चाहिए अभी. इट्स जस्ट आई एम वेरी इम्पेशेंट. बट लेट्स सी, आई वांट अ रेंज रोवर. So the house is in the vicinity, Range Rovers in the vicinity. What else? What else? I have not traveled the world also, तो maybe, but ये ऐसा है कि I just want to keep working. And traveling का भी ये है that I don't want to travel. Okay, I think I've become a diva because I've lived in. I was always a rich girl in my head, but मेरे पास बहुत time तक पैसे नहीं थे. So now either I'll travel first class and everything has to be like very luxurious, or I'll not. Yeah, either I'll stay in a 7-star or 5-star, the best suite they have, or else I'll rather cancel the whole plan. I don't want a guy to pay for shit. Like I feel like if a guy pays for you, he starts expecting things. Not just sex, but even other things. Like, you know, you listen to him, and मैं तो बाप की नहीं सुनी, किसी आदमी की क्या फिर सुनूंगी. So that's why I want to buy my own things. Fantastic. Let's go to the next segment. It's things about you that we could not find on Google. Okay. There are things like that. So I'm going to ask you these questions. One thing that people don't know you are good at. You never know when I'm lying, when I'm not lying. What do you like to do in your spare time? I read. Also, I like to just sit idle. कुछ नहीं. Nothing. फोन चलाऊंगी, मजा आती है, बैठी रहूंगी बेड पे. What did you buy from your first salary? बस तो बाई नहीं कर पाई थी, रेंट में ही चले गए थे सब. नहीं, पर ऐसे मैं ना क्या करती थी, जब भी मेरे पहले ऐसे पैसे आते थे, एक्चुअली मैं रेंट भी बाद में देती थी. मैं फॉरएवर 21 जाती थी और एक ना हिस्सा होता है उनका सेल पे 250 रुपए के, वो एक्स्ट्रा लार्ज में कपड़े बेचते थे. मैं वो उठा के लेके आती थी ढेर सारे और खुद ही काट पीट के उनको फिर स्टाइल करती थी. Wow. Yeah. The first designer where you bought? Mugler. Kareena Kapoor said that you have guts, you're very Oh, bold. yeah, She recently said it. Your reaction? I was blown away. So I couldn't believe it at first. मुझे लगा ये मजाक हो रहा है. उसने कुछ बुरा कहा है और ये लोग ना मेरे मजाक कर रहे हैं मेरे साथ कि अच्छा कह दिया है. But then I just saw the video. I'm like, what the करीना कपूर, मतलब उस दिन मुझे लगा कि मैंने कुछ अचीव किया है लाइफ में. करीना कपूर ने मेरी तारीफ करी है, करीना कपूर ने. और लाइक बहुत अचीव किया. तो जो उसका गम था ना कि रणबीर ने मुझे बोला बैड टेस्ट, मैंने कहा भाड़ में जाए रणबीर. करीना कपूर ने तारीफ कर दी, अब तक क्या है रणबीर की औकात. करीना हो गया बस. It's now Kareena has praised me. I don't need anyone's validation on anything. It's done. It's done. It's done. If you wanted to style someone for a day, who would you style? For a day, I don't know. I would like to spend the day with Rekha ji. Wow. Yeah, not style her. Not style. Just spend the day. मतलब ऐसे बोल दूंगी कि I want to style you. Would you? But I would just not style her. I would just love to spend the day and know more about her. She's just so mysterious. And that aura. Who's your role model? Role model. I don't know यार, ऐसा कोई role model नहीं. I feel I'm my own role model. Yeah, honestly. I think I know the answer to this question, but what makes you the happiest? Money. Yeah. Right now, yes. Like if there's a news that, you know, we've cracked this deal worth so and so, it just gets me so excited that yes, money is coming, money is coming. Yeah. Money gets me really excited. Amazing. Okay, we're going to show you an old photo and you have to tell God. me what the circumstance was, what was going on in your life. Where did you get this from? We stopped. Oh my God, I think I uploaded. ये मैंने upload नहीं करी है. I didn't upload this. I think this was quarantine. Yeah, we were quarantining. मैं लखनऊ में थी. Very rare that 4 sisters are smiling together. Very rare. Oh God, I met Javed Akhtar at the airport. I saw him. And I usually don't go to any celebrity I see because I'm very scared. Yeah. एक दो बार कुछ celebrities ने झाड़ दिया है. हाँ, बदतमीजी कर दी थी. कि whatever, they're like very rude. Yeah. तो फिर मेरा मन हट जाता है. But I was like कि इनके पास तो जाना है. क्योंकि people have, you know, Thought that you're... Yeah, we are related. So Javed ji खाना खा रहे थे and I was just standing there and he thought I'm a fan.
देन ही सेड कि अभी थोड़ी रुक जाइए. फिर मैंने कहा ठीक है थोड़ा रुकते हैं जब वो खाना खा लेंगे. But then he's like, खाना खाते ही like, are you Urfi? मैंने कहा yes yes. मैंने कहा अरे आपने पहचाना नहीं आपकी पोती हूँ मैं. Yeah, and then he just started smiling. मैं खुद ही फिर बैठ गई and then we had a good laugh about it. मैंने कहा अरे then he was like कि आप किसी दिन घर आइए जोया और फरहान से मिलाएंगे. But I was like अरे नहीं यार उनको प्रॉब्लम होगी. He's like why? अरे जायदाद के 3 हिस्से हो जाएंगे ना फिर. He was laughing about it. I was he's a sport man. He's amazing. Yeah, amazing. So I went to this party and Abu Jani Sandeep Khosla. So I was there. We was standing on a table like this, having a drink. Suzanne just came and she accidentally dropped a glass. गलती से मेरी बहन वहाँ खड़ी थी तो उसके थोड़ा सा इधर हो गया था. So then I was like, shit, are you okay, Asfiko? And I'm like, are you okay? And then she just went like, Urfi, hi. And I was like, wait, मार देगी क्या ये? Because I had a public spat with her sister, Farah. So I got scared कि ये मार देगी अभी मुझे या कुछ बोल देगी बेइज्जती हो जाएगी यहाँ पे. But then she was just like, hi, how are you? I really like you. And I'm like, you know I had a fight with your sister, right? My first response was this. But she's like, who cares? I like you. You're amazing. Okay, we're going to take last questions. So this is something that all of us are grappling with. Ki, what do we close this with? But we thought it would be very appropriate to ask this. In India, in many parts of India, there are many Urfis, right? Who hide their clothes under large jackets, who sing and dance behind closed doors, who are told ki your dreams are too big. What would you say to them? I would just say your life is your life. Sometimes even your parents, people around you will not understand it. And the only person you have to convince is yourself. I mean, until you... अगर आप अपने आप को चवर नहीं समझोगे तो लोग भी आपको चवर नहीं समझेंगे. आपको अपने आप को समझना है कि नहीं मैं कड़क 2000 की नोट हूँ भाई, तब लोग भी वैसे समझेंगे. You have to only and only convince yourself. Opinions of others don't matter. क्योंकि किसी को फ्यूचर पता ही नहीं है, आपको भी नहीं पता है. But I feel like जिंदगी लंबी है, आपके जो ड्रीम्स हैं उसको ट्राई तो जरूर देना चाहिए. I started working when I was 17. Even I felt after 5-6 years that क्या यार ब्रेक ही नहीं मिल रहा है, काम ही नहीं मिल रहा है, पैसे ही नहीं आ रहे हैं. But I never had a plan B. So maybe that's why I kept going on. I think confidence is the only thing. You have to believe in yourself. That's it. Amazing. Thank you so much. Thank you. This has been amazing. It's been one of our best. And thank you for being you, for being so raw, so candid. You're going to inspire a lot of girls. Thank you. We will all pray for the Range Rover. And No, for the pray 8-bedroom करना ही है तो फिर Rolls Royce के लिए करो. अच्छा, okay, Yeah, then ठीक है. fuck it, fuck Range Rover then. Let's make a... So, okay, we will pray for the Rolls Royce. And we Yeah, will pray which for Shahrukh the... Khan just bought वो 10 करोड़ वाली. उसके लिए करना. Specific. वो 6 करोड़ वो सस्ती वाली नहीं चाहिए मुझे. फिर आप चाहिए खरीदूंगी तो best. Best. And the 8 BHK house for you. Maybe a bungalow then. Okay. If you're praying, then pray for it. Amazing. Thank you so much. Thank you. Thank you. If you like this episode, don't forget to subscribe to our channel and hit that bell icon. Thank you all for being the best community, and I'll see you soon.